हेलो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करांगे टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर क्लास 11 like class 10 up to class 10 you read about the numbers, natural numbers, whole numbers, rational numbers, irrational numbers and real numbers. Up to 10th standard we discuss about the numbers, natural number, whole numbers, rational, irrational and real numbers. Similarly we have complex number. For complex number, firstly we discuss about the topic aorta. For complex number, discuss करोगे aorta. What is meaning of aorta? Aorta meaning of aorta is aorta represented by I is equal to under root of minus 1. Aorta is equal to under root of minus 1. Aorta is equal to under root of minus 1. For example, if we have under root of minus 16, meaning of this term, under root of minus 16 means we write this term as a root 16 into root minus 1. Under root 16 is 4. Under root minus 1 is a. Under root of minus 1 is a. Clear है term? Now, under root of minus 25. Under root of minus 25 is, this term is written as root 25 into root minus 1 and root minus 1 is a. This term is 5. Same term, if we write minus root 64, बिल्कुल ठीक. Root 64 is 8. Root 64 is 8 and under root of minus 1 is aorta. This term is 8 aorta. कोई भी नंबर है डायरेक्टली स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाएगा. अंडर रूट ऑफ माइनस 1 इज रिटन एज aorta. Now again, value of aorta is minus 1. Value of aorta, you write value of aorta is equal to under root of minus 1. Value of aorta is equal to under root of minus 1. Squaring करो. Squaring both side करोगे. Aorta square is equal to minus 1. Aorta square is equal to minus 1. Now, aorta cube. Aorta cube. Next term is aorta cube. Possible है लिखना aorta cube as aorta square into aorta. Aorta square into aorta. Value of aorta square. बोलो value of aorta square. Value of aorta square is minus 1 into aorta. This term is equal to minus aorta. Now value of aorta cube is equal to minus aorta. Value of aorta cube is equal to minus aorta. Now value of aorta raised to power 4. Value of aorta raised to power 4. This term is equal to aorta square into aorta square. Now value of aorta square. Value of aorta square is minus 1 and again value of aorta square is minus 1. Now this term is equal to 1 means value of aorta 4 is also equal to 1. Main terms है aorta square minus 1, aorta cube minus aorta, aorta 4 1. Aorta square minus 1, aorta cube minus aorta, aorta 4 is 1. Learn करोगे these numbers. Now, कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मोर देन 4 डायरेक्टली आ जाएगी like this. If we have aorta, what this question? Aorta 5, then possible है लिखना. This term is aorta 4 plus 1 and this term is written as aorta 4 into aorta power 1. Value of aorta 4 is 1 and this term is aorta. That means aorta 5 again किस इक्वल हो जाएगा? Aorta. Clear है term? Now next term, if we write aorta square, aorta 6, aorta 6. If we write aorta 6, aorta 6 is aorta 4 plus 2. This term is equal to aorta 4 into aorta square. Remaining term, this is 1 and aorta square. Value of aorta square is minus 1 and the final answer is minus 1. मतलब aorta 6 हो जाएगा minus 1. कोई भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी.
कोई भी वैल्यू मीन्स लाइक if we have aorta raised to power 25, if we have aorta raised to power 25, डिवाइड करो बाय 4, डिवाइड करो बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 करोगे देन दिस नंबर इज लाइक 25 है, डिवाइड बाय 4 करोगे दिस टर्म इज 4 6 24, रिमेनिंग टर्म इज 1, then we write this term as a 4 into 6 plus 1, 4 into 6 plus 1, and this value is written as aorta 4 into 6 into aorta raised to power 1. First term is always is equal to 1 because value of aorta 4 is 1, aorta 4 is 1 and power 6 again 1 हो जाएगा. This term is always 1, this term is always is equal to 1 and aorta power 1 बचेगा. This is equal to final term is aorta. आंसर हर बार रिमाइंडर टर्म ही आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा दिस इज योर फाइनल आंसर, जो भी रिमाइंडर नंबर आएगा दिस टर्म इज योर फाइनल आंसर, रिमाइंडर टर्म इज योर फाइनल आंसर एंड रिमाइंडर इज ऑलवेज, जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर इज ऑलवेज 0 1 2 3, रिमाइंडर ओनली 4 नंबर्स ही आएंगे 0 1 2 3, अदर देन कोई रिमाइंडर नहीं आएगा क्योंकि इट इज डिविजिबल बाय 4, रिमाइंडर 0 1 2 3 आएगा. कोई भी क्वेश्चन आ जाए लाइक again if we write aorta power 53, aorta power 53, this term is written as 4 into 13 plus 1, 4 into 13 plus 1, this term is also written as aorta 4 into 13 into aorta power 1, जो भी रिमाइंडर टर्म आएगा. Aorta 4 term is always is equal to 1. This term is equal to 1 into aorta. And the final answer is aorta. Final answer is aorta. Same term, if you write aorta raised to power 103. 103. This term is written as aorta 4 into 25 plus 3, 4 into 25 plus 3, this term is always is equal to 1, this number is always is equal to 1 and the remaining term is aorta power, जो भी remainder number आएगा, remainder number is 3, remainder number is 3. Now this term is equal to aorta cube is equal to minus aorta, aorta cube is equal to minus aorta. Clear है students? Now अगर क्वेश्चन आ जाए aorta raised to power 200, aorta raised to power 200, this term is written as 4 into, this term is written as 4 into 25, this term is written as 4 into 25, 4 into 25. Now this value is equal to 1 raised to power 25 and 1 raised to power 25. Aorta 4 is 1 because aorta 4 is 1, 1 power 25 is 1. This is your final. Clear है? Now start करो question. Use of this. 6 aorta raised to power 54 plus 5 aorta power 37 minus 2 aorta power 11 plus 6 aorta power 68. Always divide by 4 करोगे. Divide by 4 करो. This number is written as 6 aorta power 4 into 13 plus 2. Second term is written as 5 aorta 4 into 9, that is 36 plus 1, 37. Next term 2 aorta 11, 4 into, this term is 4 into 2 plus 3, 4 into 2 plus 3, and the last term is aorta 6 aorta raised to power 4 into 7. Aorta 4 is always 1, therefore this term is 1, this part is 1, this term is 1 and this last term is also 1. And जो remaining term बचेगी किससे इक्वल बचेगी? remaining term 6 aorta power 2,
जो रिमाइंडर आएगा एओटा स्क्वायर। इन दिस केस 5 एओटा पावर 1, in this case minus 2 aorta power, in this part 6 aorta power 4. Now, aorta square, aorta square and aorta cube. Value of aorta square is equal to minus 6. This number is equal to 5 aorta. The value of aorta cube minus aorta, and this term is plus 6. Minus 6 plus 6 cancel. Remaining term is 5 aorta minus plus 2 aorta. And 5 aorta plus 2 aorta is written as 7 aorta. This term is your final. 5 aorta plus 2 aorta is written as 7 aorta. Clear as? Now, next question. Next question. 1 by aorta. Evaluate करो 1 by aorta, 1 by aorta square, 1 by aorta cube, 1 by aorta 4. Now, directly value put करोगे aorta square, aorta cube, aorta 4. Direct value. 1 by aorta. Value of aorta square. Value of aorta square is minus 1. Value of aorta cube is minus aorta. And value of aorta 4, last term, value of aorta 4 is equal to 1. Value of aorta 4 is equal to 1. Now, this term is written as 1 by aorta plus minus 1 plus minus 1 by aorta, and last term plus 1 by aorta minus 1 by aorta cancel, minus 1 plus 1 cancel, remaining answer is 0. This term is your final answer. Remaining answer is 0. कोई डाउट है? क्लियर है टर्म? नाउ नेक्स्ट है, अगर 1 बाय एओटा, अगर सिंगल टर्म आ जाए 1 अपॉन एओटा, देन 1 बाय एओटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो विद द नंबर एओटा. डिनोमिनेटर टर्म इज एओटा. Denominator term बोलोगे, this is aorta square. Denominator term is aorta square, and the value of aorta square is equal to minus 1. Now this part is equal to minus aorta, means 1 by aorta किससे इक्वल हो जाएगा? minus aorta. Now learn करो next term 1 by aorta equal to minus. Now extra term हो जाएगी, means firstly याद करना चाहिए aorta square is equal to minus 1, then aorta cube is equal to minus aorta, then aorta 4 1, and now 1 by aorta is also written as minus. कुछ terms हैं, learn करो. Now next term is same question based on aorta, again question based on aorta. Find the value of aorta raised to power 47 minus 1 upon aorta raised to power 47. Again divide by 4. Always divide by 4 करोगे. This term 4 into 11 plus 3. 4 into 11 plus 3 minus 1 upon aorta 4 into 9 plus 1. 4 into 9 plus 1. This number is aorta 4 term is always 1. This term is 1, and here this term, and the remaining term is equal to aorta cube minus 1 by aorta power 1. Aorta power 1 is aorta whole. Aorta power 1. Now value put करो aorta cube and 1 by aorta. Both terms की value put करो. Aorta cube की भी value put करोगे and 1 by aorta दी. Aorta cube is equal to minus aorta. Minus 1 by aorta the value. 1 by aorta is written as minus aorta whole square. Minus aorta whole square. Now check करो. This term is minus aorta minus plus aorta whole square. Minus aorta plus aorta cancel.
जीरो टर्म बचेगा, जीरो स्क्वायर मींस जीरो इज योर फाइनल आंसर। जीरो किससे इक्वल हो जाएगा? फाइनल। कोई डाउट है? जीरो फाइनल आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, बेस्ड ऑन एओटा, प्रूव दैट दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो। प्रूव दैट दिस नंबर इज इक्वल टू जीरो। नाउ क्वेश्चन है एओटा पावर एन, नेक्स्ट टर्म एओटा पावर एन प्लस वन है। पॉसिबल है, देखो प्लस वन पॉसिबल है, लिख पाओगे दिस इज एओटा पावर वन। एओटा पावर एन इंटू एओटा स्क्वायर इज इंटू दिस टर्म इज रिटन एज एओटा स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म एओटा पावर एन इंटू एओटा, एओटा पावर एन इंटू एओटा क्यूब। कॉमन करो फ्रॉम ऑल द टर्म्स, एओटा रेज टू पावर एन कॉमन, वन एओटा, एओटा स्क्वायर, एओटा क्यूब, वन प्लस एओटा स्क्वायर प्लस एओटा। वैल्यू पुट करोगे, वन प्लस एओटा, वैल्यू ऑफ एओटा स्क्वायर माइनस वन, वैल्यू ऑफ एओटा क्यूब माइनस। वैल्यू पुट करोगे ना, एओटा स्क्वायर इज माइनस वन, वैल्यू ऑफ एओटा क्यूब इज माइनस एओटा। नाउ कैंसिल हो जाएगा, टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। किससे इक्वल टर्म बचेगी? एओटा पावर एन इंटू जीरो, दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो। एओटा पावर एन इंटू जीरो, दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई डाउट है? नाउ इट इज एओटा। नाउ डिस्कस करोगे अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? Complex number means it is a combination of real number and the imaginary number. It is a combination of real part and imaginary part. Real part and imaginary part combination करोगे then it is this term is complex number. Real part means if you write z is equal to x plus iota y. Iota जो second term आएगी, first term is known as, this term is real term. Real term represented by r of z. Similarly, this term is represented as imaginary term of z. This term is imaginary part of z. जो aorta term है, this is imaginary part of. And z is a notation for complex. And real number represent करना r of z, imaginary number represent करोगे. Now example for these terms is examples. If we have z is equal to 3 plus 2 aorta, this is a complex. मतलब रियल नंबर प्लस एओटा टर्म इंक्लूड हो जाएगी, मतलब इमेजिनरी नंबर 3 प्लस 2 एओटा इज योर कॉम्प्लेक्स। कोई कंपल्शन नहीं है कि ओनली नंबर ही आएगा, कुछ इस तरह पॉसिबल है। रूट 3 मींस इरेशनल नंबर विद फ्रैक्शनल नंबर कोई भी 3/2 एओटा, सिंबल कोई भी आए प्लस माइनस, दिस इज आल्सो एग्जांपल फॉर कॉम्प्लेक्स। ये फर्स्ट नंबर रूट 3 इज योर रियल नंबर, जो सेकंड टर्म है माइनस 3/2 एओटा इज योर इमेजिनरी नंबर माइनस। Clear है students? Now it is the basic for complex numbers and addition and subtraction for complex numbers. अगर directly add and subtract करना है complex numbers, if z1 is equal to 5 plus 3 aorta, z2 is equal to 2 plus 5 aorta, 2 plus 5, simple add करो, addition करोगे simple, it is z1 plus z2, रियल टर्म प्लस रियल टर्म ऐड करोगे, 5 प्लस 2 इज 7, रियल नंबर प्लस रियल नंबर 5 प्लस 2 7, imaginary plus imaginary, that is 3 plus 5 aorta, 3 plus 5 aorta is written as 8 aorta, 3 plus 5 8 aorta, this is your 3 plus 5 means it is 7 plus 8 aorta is your 5. Now similarly subtract भी कर पाओगे, subtraction means if z1 minus z2 करोगे, अगर सेम नंबर लिखो z1 सेम टर्म सिंपल, z2 सेम, subtract करो रियल टर्म फ्रॉम रियल टर्म, imaginary from imaginary, means z1 minus z2 is equal to subtraction, it is 3, 3 plus 5, 3 minus 5, it is minus 2 aorta, it is minus 2 aorta. Clear है term? This is our addition and subtraction of two complex numbers. Similarly अगर multiply करना, multiplication of complex numbers, मल्टीप्लीकेशन सिंपल मल्टीप्लीकेशन है जो 10th स्टैंडर्ड मल्टीप्लीकेशन है, 3 प्लस 2 एओटा, 5 माइनस 3 एओटा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करोगे 3 इंटू 5 15,
3 into 3 minus 9 aorta. 2 into 5 10 aorta. This into this minus 6 aorta square. Simple multiplication. Now 15 10 aorta minus 9 aorta. Subtraction karo. 10 minus 9 is only 1. 1 means you write this term as a aorta. And value of aorta square is minus 1. Now this number is written as 15 plus aorta plus 6. Complete karoge 15 plus 6, 21 plus aorta. This is your final. 21 plus aorta is your final answer. Normal multiplication karo. Simple single term to single term. Multiplication karoge, add karoge. कोई डाउट? नाउ मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन करोगे, सिमिलरली अगर डिवाइड करोगे टर्म, फॉर डिवीजन अगर नंबर आ जाए कुछ 5 प्लस 2 एओटा होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, अगर डिनोमिनेटर एओटा आ जाएगा, एओटा हर बार हटाओ विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन याद होगा, without aorta term करनी है in denominator with the help of rationalization. This term is 5 plus 2 aorta upon 4 minus 3 aorta into 4 plus 3 aorta upon 4 plus 3. 4 plus 3 aorta, नीचे भी 4 plus 3. Multiplication करो. 5 into 4, numerator simple multiply. 5 4 the 20 plus 15 aorta plus 8 aorta plus 6 aorta square whole divided by denominator term simple formula a minus b a plus b. Denominator term simple formula है a minus b into a plus b. This term is equal to a square minus b square. A square minus b square. This is 4 square minus 3 square aorta square. Value of aorta square. Value of aorta square put करो. Value of aorta square is equal to 20 plus 23 aorta minus 6 whole divided by denominator term 16 minus 9. Value of aorta square. देखो ना, numerator value of aorta square put करोगे ना, in this term we put value of aorta square, that is minus 1. Therefore we write directly minus 6. This is minus 1, we write minus 6. In denominator, if we put the value of aorta square, in denominator, if we put the value of aorta square, it is minus 1. Then we write minus into minus. This term is a plus. Clear है सब? Now, 20 minus 6. 20 minus 6 is 14 plus 23 aorta whole divided by 25. This term is your final answer. This is your final answer. This is your final answer. अगर better expression देनी है, then real number separate करो and imaginary number separate. Real numbers separate and imaginary numbers separate. This is your final answer by using division. Clear है students? Now, कुछ basic question of simplification, multiplication, division. Simple है, a minus b whole square formula apply. देखो ना, 5 minus 3 aorta whole square है. Simple formula apply करो, a minus b whole square. Formula is a square plus b square minus 2a. This is your final. A square plus b square minus 2a. Formula apply करो. Formula is 5 square plus 3 square. 3 square means 3 aorta whole square minus 2 into a 5 into 3a into 3 aorta. This term is written as 25 plus 9 aorta square minus 10 into 3 30 aorta. Value of aorta square. Value of aorta square minus हो जाएगा minus 9 minus 38. 25 minus 9. This term is equal to 16 minus 30 aorta. Final answer. It's your final answer. 30 minus 16 aorta. 16 minus 30 aorta is your final answer. Clear है टर्म? Now, बिल्कुल सेम
बेसिक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। अगर एक्सप्रेशन आ गई 1 प्लस एओटा होल स्क्वायर, इफ एक्सप्रेशन इज 1 प्लस एओटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस, फर्स्टली न्यूमिनेटर सॉल्व करो होल स्क्वायर फॉर्मूला। न्यूमिनेटर होल स्क्वायर फॉर्मूला इज 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस एओटा। Value of aorta square. Value of aorta square is -1. This term is 2 aorta upon 3 minus aorta. Aorta cancel. Remaining term किससे कर बचेगी? Remaining term 2 aorta upon 3 minus aorta. Denominator aorta हो जाएगा. Rationalize करोगे. Rationalize मतलब 3 plus aorta upon 3 plus aorta. Multiplication of numerator term. This term is 6 aorta plus 2 aorta square whole divided by 9 minus aorta square. A minus b into a plus b, a square minus b square, direct value लिखोगे 9 minus aorta. Now value of aorta square, value of aorta square, value of this part and value of this part. This part is 6 aorta minus 2 whole divided by 9 plus 1. And numerator term is minus 2 plus 6 aorta divided by 10. Minus 2 plus 6 aorta divided by 10. From numerator common किया जाएगा. From numerator 2 common हो जाएगा. This term is minus 1 plus 3 aorta divided by 10. Cancel करोगे 5 term बचेगी. This is equal to 5. And the remaining answer and the final term is minus 1 by 5 plus 3 aorta by 5. Minus 1 by 5 plus 3 aorta. Clear है term? Minus 1 by 5 plus 3 aorta by 5 is your final answer. Doubt है? बिल्कुल basic question. Actually question है express in a plus aorta b form. A plus aorta b form means real number separate, imaginary number separate. इस जगह के ऊपर real separate आ गया, imaginary number separate हो गया. Clear है? Again, simple question based on normal simplification. Right, 1 upon 3 plus aorta whole square minus 1 upon 3 minus aorta whole square in the form of a plus aorta. Simple simplification करनी 1 upon 3 plus aorta whole square minus 1 upon 3 minus aorta whole. 3 plus aorta whole square minus 1 upon 3 minus aorta whole square. This number is equal to denominator a plus b whole square and a minus b whole square apply. A plus b whole square means 9 square plus aorta square plus 2ab. This is 6 aorta. Minus 1 upon 9 plus aorta square minus 3 into 2, 6 aorta. किस इक्वल टर्म बचेगी? Value of aorta square minus 1. Value of aorta square minus 1, that is 9 minus 1 plus 6 aorta minus 1 upon 9. Value of aorta square minus 1 minus 6 aorta. Now, this term is simplified term लिखोगे. This is 8 plus 6 aorta minus 1 upon 8 minus 6 aorta. Rationalize करो. सॉरी एलसीएम लगाओ, रैशनलाइज नहीं, डायरेक्टली एलसीएम अप्लाई करो. एलसीएम अप्लाई करोगे डायरेक्ट टर्म. एलसीएम, दिस एलसीएम इज 8 plus 6 aorta into 8 minus 6 aorta हो जाएगा कंप्लीट टर्म. न्यूमिनेटर टर्म पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 minus 6 aorta माइनस बाहर इस तरफ शिफ्ट हो गए 8 plus 6 किस इक्वल टर्म होगी? 8 minus 6 aorta minus 8 minus 6 aorta whole divided by denominator 8 square minus 6 square aorta. न्यूमिनेटर कैंसिल हो जाएगा 8 and 8. Remaining term minus 12 aorta upon denominator 64 minus 36. Value of aorta square. Value of aorta square is minus 1. This is plus. Now this term is equal to minus 12 aorta by 100.
कैंसल करोगे, नॉर्मली कैंसल करो, दिस टर्म इज रिटन एज डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 करोगे, दिस टर्म इज 3 and 25, 3 and 25, and the final answer is equal to 3/25 एओटा, एंड बाहर सिंबल की हो जाए, बाहर टर्म आ जाएगी 0। 0 क्यों लिखोगे? क्योंकि क्वेश्चन एक्सप्रेस करोगे इन a प्लस एओटा b फॉर्म, मींस रियल पार्ट सेपरेट एंड द इमेजिनरी पार्ट इज सेपरेट। नाउ रियल पार्ट इज 0, वी एक्सप्रेस दिस टर्म एज अ 0। कोई डाउट है? बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन क्वेश्चन, क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ डिस्कस करोगे टॉपिक इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स means two complex numbers are equal if their real terms are equal and their imaginary terms are also equal. Real part is equal to real part means अगर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 3 plus 2a होता है, then second complex number भी 3 plus 2a होता है, means real part is equal to real part and imaginary part is equal to imaginary. Real part is equal to real, imaginary is equal to imaginary, then these two complex numbers are equal. बहुत बेसिक क्वेश्चन है. Fine. X and y, if 2x plus x plus 2y is equal to x plus 2y iota is equal to 4 plus 6, 4 plus 6 iota. Now in this case question check करोगे, two complex numbers are equal, therefore real part is equal to real part, without iota term is equal to without iota term, and imaginary part, iota term is imaginary part, is equal to imaginary part. Then we write this term as a 2x is equal to 4, 2x is equal to 4, and x plus 2y is equal to 6, x plus 2y is equal to 6. Value of x is, cancel करोगे, value of x is 2, value of x is equal to 2, and similarly value put करोगे 2 plus 2y is equal to 6. Value of x substitute करोगे, this is 2 plus 2y is equal to 6, 2y is equal to 4, and value of y, 2y is equal to 4, and the value of y is equal to, value of y is equal to 2. These are your final answer. Find the value of x and y. कोई doubt? No. अगर clear है, then check करो term. Find x and y. If x and y find out करना है, if these two complex numbers are equal. Two complex numbers पता है equal given है. Value of x and y find out. Similar question है. Real part is equal to real part and imaginary part is equal to imaginary part. मतलब iota term with iota term compare करो, real number with real number. Now x plus 2y is equal to 6. Real part is equal to real and imaginary part is equal to imaginary. Iota actually compare कर रहे हो with only coefficients of iota terms. Coefficients of iota term. कोई requirement नहीं है iota, कोई भी requirement नहीं है to write iota. Only coefficients term compare करो. Now double term है, x plus 2y is equal to 6 and x minus y is equal to 8. सिंप्लीफिकेशन करो, वैल्यू ऑफ x एंड y हो जाएगी, किससे इक्वल आ जाएगी? दिस टर्म इज 3y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 अपॉन 3. वैल्यू ऑफ y इज -2/3. वैल्यू ऑफ y पुट करोगे किसी भी इक्वेशन अंदर पुट करो, फर्स्ट और सेकंड किसी भी टर्म में, सेकंड अंदर पुट कर दो, x माइनस ऑफ इन दिस टर्म इक्वेशन पुट करो, माइनस ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 8. Minus minus is plus. This is x plus 2/3 is equal to 8. X is equal to 8 minus 2/3. This number is equal to 24 minus 2. 22/3 is your final answer. Now x is 22/3, y is minus 2/3. These are your final answers. X 22/3, y minus 2/3. These terms are your final answers. No doubt? क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्कूल एग्जाम्स एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नाउ दिस टर्म इज फर्स्टली x plus aorta y whole cube is equal to u plus aorta v है। Prove that this term is equal to this. Now, in first step, formula apply करो। First term is this is x plus aorta y whole cube is equal to u plus aorta v. First term formula apply करो a plus b whole cube. किस इक्वल फॉर्मूला बनेगा? This term is a cube plus b cube plus 3ab bracket a cube plus b cube plus 3ab bracket a plus b. फॉर्मूला अप्लाई करो ऑन दिस साइड, इन दिस साइड फॉर्मूला अप्लाई करोगे x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy एओटा इन ब्रैकेट टर्म बनेगी x प्लस एओटा y इज इक्वल टू u प्लस एओटा v इज इक्वल टू u प्लस एओटा। वैल्यू ऑफ एओटा क्यूब बोलो, वैल्यू ऑफ एओटा क्यूब, वैल्यू ऑफ एओटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस एओटा। वैल्यू ऑफ एओटा क्यूब पुट करोगे माइनस एओटा, वैल्यू ऑफ एओटा क्यूब इज माइनस एओटा, दिस इज माइनस एओटा वाई क्यूब प्लस वैल्यू ऑफ एओटा क्यूब पुट हो जाएगी माइनस एओटा, मल्टीप्लीकेशन दिस टर्म इज 3x स्क्वायर वाई एओटा, दिस टर्म इनटू दिस टर्म 3x स्क्वायर वाई, सॉरी दिस इज 3x वाई स्क्वायर, 3x वाई स्क्वायर 3x y square aorta square is equal to u plus aorta v. Value of aorta square, value of aorta square, value of aorta square is minus 1. This is 3x square y aorta. Value of aorta square minus 1. This term is 3xy. Value of aorta square minus 1 हो जाएगी term is equal to u plus aorta v. Is equal to u plus aorta. Now, real terms separate करो and imaginary terms separate. Real numbers, first and last number combine करके लिखोगे। First and last number real numbers combine करो, real numbers combine करोगे and aorta common करोगे plus aorta from these two numbers. Aorta common करोगे। Now जो सेकेंड टर्म है फर्स्टली लिखो 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, जो भी टर्म है पॉजिटिव नंबर माइनस नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू यू प्लस एओटा कॉमन इज इक्वल टू यू प्लस एओटा। देखो ना, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कंबाइन लिखोगे, एओटा कॉमन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड नंबर, एओटा कॉमन करोगे देन पॉजिटिव नंबर माइनस नेगेटिव नंबर टर्म रिप्रेजेंट करोगे, पॉजिटिव नंबर माइनस नेगेटिव नंबर जो भी टर्म रिप्रेजेंट करोगे। नाउ रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट करोगे, रियल पार्ट इन दिस केस रियल पार्ट इज दिस टर्म विद रियल पार्ट यू करोगे, देन इमेजिनरी पार्ट विद इमेजिनरी पार्ट करोगे, रियल नंबर विद रियल नंबर इक्वेट करोगे विद रियल नंबर यू। सेकेंड टर्म एओटा टर्म कंपेयर करोगे विद एओटा टर्म, दिस इज 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब इज इक्वल टू x कॉमन करोगे, दिस नंबर इज x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू यू, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू यू बाय x। एंड इन सेकेंड पार्ट y कॉमन करोगे, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू v, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू v अपॉन y। चेक करो टर्म्स, कंपैरिजन रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस टर्म, प्रूव अकॉर्डिंग टू प्रूव दैट रिलेशन देखो, दिस इज फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, अकॉर्डिंग टू प्रूव दैट u by x प्लस v by y रिक्वायर्ड है, u by x प्लस v by y। एडिशन करो, नॉर्मली ऐड करो टर्म्स 1 प्लस 2, एडिशन करोगे 1 प्लस 2, सिंपल ऐड करोगे फाइनल टर्म प्रूव हो जाएगी, जो भी टर्म ऐड करोगे प्रूव हो जाएगी। एडिशन, नाउ दिस टर्म इज u by x प्लस v by y इज इक्वल टू
x square minus 3y square plus 3x square minus 5 टर्म चेक करो x square plus 3x square x square plus 3x square किस इक्वल टर्म बनेगी x square plus 3x square 4x square minus 3y square minus y square minus 4. This term is equal to u by x plus v by y. This is your final answer. जो भी prove that term same term prove करनी. This is your final answer. Final prove that term. Clear है students? बहुत अच्छा क्वेश्चन, important question for school exams. जो भी क्वेश्चन. Now, next question. बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन. फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोई भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं. प्रूव दैट रियल टर्म ऑफ z1 into z2 is equal to real term of z1 real term of z2 minus imaginary term of z1 into imaginary term of z2. नाउ प्रूव करना है नंबर्स. वैल्यू ऑफ z1 लेट करो वैल्यू ऑफ z1, वैल्यू ऑफ z1 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम करो a प्लस एओटा b, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम करो x प्लस एओटा y. a प्लस एओटा b सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस एओटा y, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम करो. नाउ टर्म सुनो, a is real part of z1, a is real part of z1, b is imaginary part of z1, a real part of z1, b imaginary part of z1, x real part of z2, y imaginary part of a real part of z1, b imaginary part of z1, x real part of z2, y imaginary part of z2. And according to question multiply करो z1 into z2, z1 into z2 multiplication करो. Multiplication is a plus aota b into x plus aota y. Simple multiplication. Simple multiplication. Multiplication start करो. A into x plus aota ay plus aota bx plus aota square by plus aota square by. And this term is z1 into z2. वैल्यू ऑफ एओटा स्केयर पुट करोगे, वैल्यू ऑफ एओटा स्केयर फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड टर्म एओटा, फर्स्टली फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड टर्म एओटा कॉमन करो. दिस इज ए वाई प्लस बी एक्स. एओटा कॉमन करोगे ए वाई प्लस बी एक्स. वैल्यू ऑफ एओटा स्केयर -1, वैल्यू ऑफ एओटा स्केयर -1, दिस इज माइनस बी वाई. दिस टर्म इज z1 into z. नाउ रियल टर्म सेपरेट लिखोगे. दिस नंबर इज z1 into z2 is equal to ax minus by plus aota ay plus b, ay plus. Now according to question write its real term. real term लिखो according to question, write its real part only. real part of this number, real part of this term. Now real part of this term is, value of real part of this expression is, real part of this expression is this term. Real part of this expression is ax minus by. Real part of the expression is ax minus by. Now a is your real part, x a real part है. चेक करो जरा फाइनल आंसर, फाइनल स्टेप. a is your real part, a real part of a है, a is real part of, a is real part of z1, a is written as real part of z1. x, next term is x, x is real part of z, x is written as real part of z. Minus b, b is imaginary part of z1, b is imaginary part of z1, and y is the imaginary part of z2, y is the imaginary part of a is real part of z1, x is real part of z2, b is imaginary part of z1,
बाय इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज योर फाइनल प्रूफ सेट। चेक करो ऊपर बिल्कुल सेम टर्म है जो प्रूफ कर रही है, जो फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ क्लियर है द बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई थिंक समझ आया होगा।